बयानकात की कार्रवाई समाप्त हुई। श्रीमान। थोड़ा सा पीछे हो जाइए, आगे रास्ते में। नमस्ते, जय हिंद। और आप सबसे इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, बिफोर वी प्रोसीड, आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक अ लुक एट योर फोन्स, पुट इट ऑन फ्लाइट मोड और पुट इट ऑन साइलेंट और turn it off, and then we'll start. First up at the outset, I'd like to say thank you to Rakesh Asthana ji and to the Delhi Police for partnering with us and also helping us bring to you Netra Suraksha, an effort at Network 18. But to set the event in motion, and before we talk about more about this, I'm going to invite Shri Robin Hibu, Special CP, Armed Police, onto the stage for the welcome address, please. Robin ji. सीपी दिल्ली, नेटवर्क 18 के जितने भी सारे जो अधिकारी जो आए हुए हैं, मीडिया बंधु और दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स साहिबान, जवान और बाकी जो सारे जो आज जो यहाँ आए हुए हैं, हर रोज हम तो अपना जब से सीपी साहब आए हैं, एक वेलफेयर ही एक वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी सबको मालूम है। और आज इसीलिए ये ऐतिहासिक है कि क्योंकि बाकी हेल्थ जो उसके लिए तो बहुत कुछ हमने कैंप किया है, लेकिन डायबिटीज को लेकर के एंड दैट इज समथिंग जो आज पहले बार हुआ है। तो थैंक यू सो मच नेटवर्क 18। आगे में ये हम उम्मीद भी करेंगे कि आप इस सिलसिला को जारी रहिएगा, क्योंकि हमारा एक सबसे लार्जेस्ट यूनिट यहाँ है और भी बाकी दिल्ली पुलिस का यूनिट है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आज आप लोग आए एंड थैंक यू सो मच। हम उम्मीद करते हैं कि इससे एक हमारे सिपाहियों को, अफसर साहिबान को अपना स्वास्थ्य रखने में हमें आगे में, ताकि हम अपना ड्यूटी अच्छा से कर सके, बीमार ना होके। इसके साथ में सबको स्वागत करते हुए थैंक यू सो मच। Thank you, Robin ji. Ladies and gentlemen, welcome to the second edition of Network 18's largest initiative, that is Netra Suraksha. अब कई लोग आप लोग सोच रहे होंगे, नेत्र सुरक्षा की बात हो रही है और डायबिटीज की बात रॉबिन हिबू जी ने की. How are these two connected? So we're talking about an issue that is diabetic retinopathy. What is diabetic retinopathy? और इसका हमारी आंखों से और डायबिटीज से क्या कनेक्शन है? We'll try and explore that and also explain to you why. And we're very, very happy, and I have to say that to keep the nation's vision safe from diabetes, that's the reason why this initiative at Network 18, that is Netra Suraksha. Firstly, I'd like to once again thank our chief guest, Shri Rakesh Asthana ji, Commissioner of Delhi Police, and to honor us with his presence. And Asthana ji has several noteworthy achievements and also accomplishments to his name, especially what he has done with the Delhi Police, such as separation of law and order and investigation in all police stations, restructuring of security
Protection Division, establishment of new cyber police stations, and reconstitution of special cell, amongst many other initiatives as the Delhi Police Commissioner. Interestingly, I have to share this. The last time I met Rakesh ji was, he was in a different uniform, and it was again a fantastic initiative that he championed, and it was at Atari, and that was with the BSF when we said vaccination program and Sanjeevani. That's another initiative, but here it's in a different uniform, and it's a different cause, but once again welfare, once again for the people, and especially our personnel in uniform, and that is about diabetic retinopathy. So again, thank you, sir. Now, today we are gathered at the headquarters of the Delhi Police Force. Besides being India's capital, Delhi is also the center of a wide range of social, cultural, and economic activities, and the Delhi Police plays several roles to maintain law and order in the city. And there's some lot of hard action that we've seen from all of you, so I have to salute you for that also. As news guys, I really appreciate what you guys are doing to keep us safe and to keep our streets safe. Meanwhile, with their watchful eyes under all situations, Delhi Police responsibly ensures safety at all times. Now, however, the health and well-being of the nation's citizens face another threat known as diabetes. Now, with that comes along more health complications if they are ignored, such as diabetic retinopathy, which impacts the vision of diabetes patients and can lead to blindness. With over 77 million diabetes patients in India, 75% of them suffer from some form of diabetic retinopathy. Now, to save India's vision from alarming effects of diabetes, Network 18 started an initiative to raise awareness towards this issue, Netra Suraksha, in association with Novartis, who would like to thank especially for partnering with us and also joining issue with us to save the vision of our brave hearts and their families from diabetes. Now, today we are at the headquarters of the Delhi Police to inaugurate Netra Suraksha's partnership with the Delhi Police and thank the Delhi Police for supporting the cause and coming together to save India's vision. Now I'd like to welcome our lovely audience to the inaugural event of Netra Suraksha camps with the Delhi Police, and thank you for joining us today. One of the cause or एक चीज which will come into mind is ये diabetic retinopathy और ये diabetes का क्या connection है? I want to get answers of them. मेरे दिमाग में भी है कि भाई मुझे तो शुगर नहीं है, so why should I be bothered about diabetic retinopathy? अब आंखें अगर टेस्ट कराना है तो भाई टेस्ट करा लेंगे, उसका डायबिटीज से क्या कनेक्शन है? So these are questions which are there in my mind and in yours also कि भाई हम आप बैठे क्यों हैं? मुझे चश्मा लगा है तो फिर उसका मतलब थोड़ी है कि मुझे डायबिटीज है, या मुझे शुगर है तो उसका मतलब थोड़ी है कि मुझे चश्मा लगना चाहिए. चश्मा ही नहीं, आंखें खराब हो जाएंगी, ये कैसे हो सकता है? So we'll try and answer and get insights into all of this. I'd also, with your kind permission, sir, like to invite some distinguished guests who are with us to find answers and also to share experiences. I'd like to begin with Dr. Ramaswamy King. He is the Vice President of VRSI, the Vitro-Retina Society of India, and he will be giving us the answers. I have, may I also request Vaishali Iyer, Country Head Communications, Patient Engagement and CSR at Novartis India. And last but not the least, a very familiar face, and she's come because it's the Delhi Police. Rani Rampal, member of the hockey team. Aye. आप इतनी फिट हैं और जिस तरह से आप आई हैं, आपको ऐसा लगता है आप भी दिल्ली पुलिस की ऑफिसर हैं, खाकी पहन के आई हैं. Thank you very much, and let's try and lead up to the conversation. I'm going to take this forward. Let me first ask him. I have to get my questions right, sir. Commissioner साहब से सवाल पूछ रहा हूँ. So, sir, let me first ask you. Thank you very much for doing this and for partnering with us. What did you think when we came to you and said, sir, diabetic retinopathy pe we want to do a camp for the Delhi Police? Actually, I know a little bit about it, so I felt that it will be a very good initiative, not only for the citizens of the country, but also for the police force, because most of our officers and Jawans, they work 24/7, and they don't have the regular eating habits. They can't eat at the time fixed for lunch, breakfast or dinner. So in the process, the diabetes has become very common amongst forces all over the country.
So when you came to me with this suggestion or the request, I lapped it up and we immediately decided that we should be the right people to begin with this campaign. So you are somebody who was aware that there is a connection of sugar, madhumeh or diabetes with the eyes. Yes, I know about it. You know about it. So now let's do a quick dipstick with all of them who are sitting here. कि आप में से कोई है जिसको डायबिटीज है? अच्छा, तो शुगर की प्रॉब्लम है. आप में से कोई है जिनको जो किसी को जानते हैं जिनको डायबिटीज है? ऊपर ऊपर. हाँ, अब हाथ उठ रहे हैं. नमस्ते. अच्छा, आप में से कितनों को पता है कि शुगर या डायबिटीज का आंखों से कनेक्शन है? आंखें खराब हो सकती हैं. नॉट बैड. कई लोगों को पता है डॉक्टर खेम. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डायबिटिक रेटिनोपैथी. I want to thank you with the special occasion. Retinopathy occurs as a complication, like you hear about diabetic, how kidneys get affected. The only problem with diabetes is over a period of time, it affects all the small blood vessels in our body. And eye is one structure, and we have the kidneys, we have the nerves, all this get affected over of time. So eye is the only place, as I say, a window to the body is the eye. You can see the blood vessels in its real form. So when we examine the eye, the back of the eye, we can see the nature of the blood vessels. And because of diabetes, the blood vessels actually over a period of time gets worn out. And they start leaking. They become abnormal. And this causes problems to the retina, and then the whole condition of diabetic retinopathy starts happening. So that's the main problem, how vision is affected. So we need to, but it doesn't happen overnight. It happens over a period of time. So every diabetic has a chance to prevent this. I think I'll So stop every here. diabetic has a chance to prevent this. So you're saying, so should I get myself screened for my eyes if I realize I have sugar or Absolutely. diabetes? Or if I get myself screened periodically, I can actually find out whether or not I have diabetes. Exactly. Is that possible? Yes, sir. You definitely can prevent if you get yourself screened. When you know you have diabetes, it's very important that you go. Even your vision may be absolutely normal, but you may have changes in the back of the eye, and that can be identified only on screening. If somebody looks at the back of the eye, they'll be able to find out that there is diabetic retinopathy. And when you find it early on, further deterioration can be prevented absolutely. You can preserve your vision. No, because कई बार ऐसा होता है ना कि आपको डॉक्टर कहते हैं कि देखिए आपका शुगर लेवल्स बॉर्डर लाइन है ना, जैसे बॉर्डर लाइन, सो उसको आप कंट्रोल कर लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे. सो इन दैट केस शुड आई गेट माई सेल्फ टेस्टेड और नॉट? व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस, सर? I believe that we should have a regular medical checkup. In forces we have 40 plus people have to undergo this checkups mandatorily. But otherwise also I personally feel that everyone should have this awareness to have one full checkup, full body checkup once in a year. One full body checkup once in a year. Yes. But these path labs, doctors are, all these places where you go and get our check, वो तो सिर्फ खून निकाल लेते हैं and then do a urine test. They don't get ourselves screened. They don't do. So, should I be a patient with diabetes? I don't have diabetes. So let me ask you, why should I get myself screened? आप में से कुछ लोग हैं जो ये सोच रहे हैं, भाई मुझे तो शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्यों स्क्रीन कराऊं? So what will be your answer to people like that? रानी रामपाल हैं, देखिए, उन्हें तो नहीं है, वो क्यों स्क्रीन कराएं? You mean for the eye or? Yeah, for the eye. Yeah, see, it has got, diabetes is one problem, but if you're getting your eyes checked up, there are so many, as I said, eye is a window to the body. There are a lot of things that gets reflected or shown in the eye. But mainly for diabetes, it has to be examined. The other problems are today, I don't know if you do, there are so many people who don't get their eye examined with a simple refractive error. Yeah. People don't get their eyes examined. Only when they realize that a simple glasses can improve their vision, they see the whole new world.
करेक्ट, देसी, दैट आई एग्री, बट समटाइम्स ऐसा होता है ना, कभी कभी थोड़ा धुंधला, आपको कभी हुआ रानी जी कि आप खेल रहे हैं, सडनली थोड़ा धुंधला लग रहा है, फिर ऐसा लगा चलो चेहरा धो लेते हैं, मुंह धो लेते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा? हाँ होता है, स्पेशली जब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, देन यू आर लाइक कि ठीक है अब थोड़ा देर कहीं बैठना है, वो बिल्कुल ब्लाइंड आपको कुछ। सबसे पहले तो आप यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर आप मुझे बताइए आप क्यों आई? आपका अल्टीरियर मोटिव क्या था यहाँ? ये जो दिल्ली पुलिस का इवेंट था तो दिल्ली पुलिस का इवेंट था तो मुझे अच्छा लगता है बिकॉज पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा एवरी सिंगल डे लोगों की हर फील्ड में इतनी हेल्प करते हैं, सो मुझे लगा कि अगर मैं भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक सीपी सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल इनिशिएटिव। एंड अच्छा लगा यहाँ पे आके कि इवन मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में, डायबिटीज़ से कि आंखों पे इफेक्ट होता है, या आंखों के मतलब वजह से हमें ये भी पता चल सकता है कि अगर हम आई टेस्ट कराएं कि हमें डायबिटीज़ है। लकीली कभी फैमिली में किसी को ऐसा हुआ नहीं, इवन 20-22 साल के करियर में किसी मतलब एटलीस्ट हॉकी में मैंने कभी किसी प्लेयर को देखा नहीं किसी को डायबिटीज़ हो, तो इसके बारे में सीरियसली मुझे कोई आइडिया नहीं थे कि ऐसा होता है। बट यहाँ आके मुझे भी, मेरे लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा कि मुझे पता चला आज कि हमारी आई साइट पे कितना इफेक्ट पड़ सकता है अगर हमें डायबिटीज़ है। तो या तो अभी आप बिल्कुल हेल एंड हार्टी है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि स्क्रीन करा लेना चाहिए ना? चेक कराने में नहीं क्या जाता है? बिल्कुल, आई थिंक हम सबके लिए हेल्थ जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी है तो हम सब देख सकते हैं डेली रूटीन में कि हम अच्छे से काम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हेल्थ में कुछ भी प्रॉब्लम है, एक छोटी सी भी प्रॉब्लम है, तो हम खुद से इरिटेट रहते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, एंड जो हमारा नेचर है वो भी बहुत, उसमें भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। हम बहुत जल्दी नेगेटिव फील करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम खुद की हेल्थ से परेशान हैं। बट हमें सबको जो रेगुलर हेल्थ चेकअप है वो कराना चाहिए, एंड स्पेशली हर पार्ट इम्पॉर्टेंट है बॉडी का, लेकिन आइज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आइज़ की उससे हम एक लाइफ को कलरफुल वे से देखते हैं कि लाइफ कितनी सुंदर है। अगर आई हमारी नहीं है, आइज़ हमारी सही नहीं है, तो लाइफ तो बहुत ब्लैक एंड वाइट लगती है। अगर आइज़ ही नहीं सही होंगी, कुछ देख नहीं सकते तो। वेल सेड, वेल सेड। आइज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हॉकी लेके ओपोनेंट का डंडा करती हैं, आप लोग डंडा लेके ओपोनेंट का दौड़ाते हैं, तो अब वहां पे वो 2-4 इंच का फर्क है ना, अगर आई साइड क्लियर नहीं हुआ तो फिर गोल पोस्ट और गोल और नो गोल से वो 2 इंच का ही फर्क है, उधर थोड़ा धुंधला दिख गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन अगर हॉकी की बात करो तो आइस बहुत इंपॉर्टेंट है हॉकी में, तो बिकॉज एवरी सिंगल सेकंड आपको आपका दिमाग तो कॉन्स्टेंटली चल रहा है, लेकिन आइस भी आपको उधर से बॉल आ रही है, लेकिन आपको ये भी देखना आपका राइट में कौन सा ओपोनेंट है, लेफ्ट में कौन सा, आपके पीछे कौन है। तो आपका आइस जो है वो कंटिन्यूसली काम करता है ब्रेन के साथ ना, क्योंकि हमारा हॉकी में सबसे मेन जो बोलते हैं ना, एक प्री स्कैनिंग जिसको बोलते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर जब हमारे पास बॉल है तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमारा प्लेयर आगे कौन है, पीछे कौन है, साइड में कौन है। तो वो दिमाग के साथ तो चलो हमें काम करना है, लेकिन आइस सही होंगी तो हम देख सकते हैं कंटिन्यूसली ना, और बिना बॉल के भी हमें आइस तो चाहिए देखने के लिए कि हमारा ओपोनेंट कहाँ पे है, कि हम जिससे अपने गोल को प्रोटेक्ट कर सकें। सो आई थिंक किसी के लिए भी आइस बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड हमने कुछ प्लेयर्स भी देखे हैं जो पैराथलीट्स होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, एंड वो किसी का हेल्प लेके जब वो रनिंग करते हैं, देन वी सी कि हमें देख के लगता है कि इनके लिए तो लाइफ कितना ही ज़्यादा, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, ब्लैक एंड वाइट है, कि इनको पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है ना, कि क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा है, वो सिर्फ सुन सकते हैं और उस सुनने से वो फील कर सकते हैं। बट वी आर लकी कि हम सबकी हमारे पास आइस हैं, तो इसका जिम्मेदारी हमारा खुद का ही है उसको टेक केयर करना। एंड आजकल तो वैसे बहुत फैसिलिटीज आ गई हैं कि हम रेगुलर चेकअप्स के लिए जा सकते हैं, ताकि इनिशियल स्टेज में हमें पता चल जाए कि प्रॉब्लम क्या है, तो उसका ट्रीटमेंट भी इजीली हो सकता है। जब वो बहुत वर्स्ट सिचुएशन में चली जाती है देन डिफिकल्ट है। बिल्कुल। अब पता है बहुत लोग यहाँ सोच रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि चारों तरफ नजर होती है तो आप अच्छी हॉकी खेल सकते हो, तो दिल्ली पुलिस वाले सब जो है, मैं भी हॉकी खेल सकता हूँ, ये मैं भी हॉकी खेल सकती हूँ, हमारी भी तो नजरें सब तरफ होती हैं। अब राकेश अस्थाना जी को देखिए, लेफ्ट राइट पीछे क्या कर रहा है, सब इधर नजर रखे हुए हैं। अब सीपी साहब मेरे बगल में रख के इनको सब पता है, तो आप सोच लीजिए आप लोग क्या कर रहे होंगे।
डायलॉग है कि हमारे आदमी चारों तरफ. But just like Rani Rampal did not know that diabetic retinopathy is something that can set on if you are a patient with diabetes, or if you screen yourself and if you have diabetic retinopathy, if you're found, that means you are a patient of diabetes. These are possibilities. There are lakhs of people who don't know, जिनको पता नहीं है. And that's the reason why this initiative of Netra Suraksha. So let me ask the lady who's decided to partner with us as part representing the company which is our associate, that is Novartis, why? Good question, and thank you for that. I think first I would like to compliment the entire Network 18 team for this very meaningful initiative, you know, something to do with the eyes, something to do with diabetes, which is a national problem. It's the biggest healthcare challenge in the country, if I may say so. Also want to thank all the dignitaries over here who are there in solidarity to really support this cause. So thank you very much. For Novartis, you know, I would actually put it in three parts, you know, why we want to partner with this initiative. The first part, if you really go to see, if I go back to the history of Novartis, we are almost a 250-year-old organization present in the country since 1947. Our purpose is really to extend and improve patient lives. Now that really doesn't mean that, you know, we just make medicines and it gets over with that. The entire value chain is very critical, right from diagnosis to screening to awareness. And this actually leads us to live our purpose. So that's point number one. Point number two is, if you really go back to the healthcare challenge of the country, which is diabetes, one of the biggest one. If you look at what the government is working towards, preventable blindness, I think these two pieces are very important for us to take up, more so because we are leaders in diabetes management as well as eye care. Right. So it has a beautiful synergy. And third piece, and this is the real truth, that we recognize the fact that we can't do it alone. Yeah. And we need partners, whether it is in the space of screening, diagnosis, or very, very reputed organizations who would help us drive the cause. And just to tell you, Anand, that, you know, we've been working on this since, I think, last couple of months. And the kind of response that we've got, whether it is from the army, whether the Delhi police, and thank you so much, sir, for this, the BSF or the CRPF, has been superb. And needless to say, VRSI and RSCCDI who've like really come up and partnered. So if you really look at it, it's very holistic. It's not about Network 18 or Novartis, but it is everybody who's associated with the cause has stepped up, including the government of Gujarat, the other state governments who are wanting to partner and take this mantle forward. Because they realize it's a real issue. Yeah. I just quickly wanted to ask, if I have DR, that is diabetic retinopathy, can I cure it? Is it curable? It is curable depending on which stage you are being identified. So जितना जल्दी पकड़ लो उतना The possibility earlier to cure you find out, cure is definitely possible. But the later you go, you can only arrest it, you can't reverse it. You can't reverse it. So the whole idea of screening is to do it early. That's the key thing. Before you lose your vision, you should ensure you're screened. तो जुर्म होने से पहले पकड़ लो. So, but I'm going to now request Rakesh ji to please officially launch the awareness camps, the Netra Suraksha awareness camp. So I request you to now inaugurate the Netra Suraksha awareness camp that will screen thousands of families' eyes of members of the Delhi police. So, and how we're going to do it is, I'm going to request you to be the first to get yourself tested. So now what we're going to do is, ये lights थोड़ी और dim हो जाएंगी. ये कोई ऐसा ड्रामा नहीं कर रहे हैं हम लोग, जैसे रियलिटी शो में होता है. इसमें ऐसा है कि आई टेस्ट जब स्क्रीनिंग कराते हैं तो lights have to be dim. So that's the measure. That's why the lights are being dim. Yes, you will have to, sir, you will have to sit on this side. Just open up this one. So that's the machine which we're going to use to screen. So first Rakesh ji, then Rani ji, one by one.
So the screening actually takes just 20 seconds, but the result उसके बाद में जब result आएगा वो 2-3 मिनट का समय लगेगा. So he's the first. So Rakesh ji is leading. He's going to set the motion. Then we're going to request all of you to get yourself screened. आप सब अपना screening कराइए. उसकी भी हमने सुविधा की हुई है. शिबू जी. बहुत सिंपल है. सिर्फ आपको बैठना है, ये दाढ़ वहां लगानी है और फिर देखना है. इट्स वेरी सिंपल. कोई टेंशन नहीं है. मैं कराऊंगा इसके बाद. Screening can be done at any. Yeah, the screening can be done at any place. So that's why we keep saying that every place, every opportunity that the person gets should have their eyes examined, or, you know, especially for diabetic. Sir, sab changa. Bilkul. So he's gotten his test done. So we're going to get the results in some time. Okay, I'm going to ask Rani Rampal also to come. Okay, so now we have RR. So we need to complete. RRR है ना? So third R, I'm going to ask Robin ji. Next, तो RRR हो जाएगा, है ना? Okay, okay. अच्छा, हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप नहीं करा सकते हैं. तो मैं आपके जगह आ जाऊं? चलेगा, ठीक. पूरी दिल्ली में अब हम 30 कैंप करने वाले हैं. We're going to do 30 camps all across Delhi. Sir, बैठिए please. 30 camps all across Delhi, और जहां पर आप सपरिवार जा सकते हैं, and you can get yourself screened to understand whether or not you have DR. So it doesn't matter whether you have diabetes or not. करा लेना चाहिए भाई. रानी रामपाल कह रही हैं कि आज तक मैंने मेरा कोई टेस्ट नहीं कराया, पहली बार बैठ रही हूँ. आप लोग कह रहे हैं तो मैं भी करा लेती हूँ. वो कहते हैं हमारे फैमिली में तो कोई है ही नहीं जिसको डायबिटीज हो, तो मैं क्यों कराऊं. मैंने बोला करा लो, पता तो लग जाए सब चंगा थी कि नहीं. So मैं इनकी रिपोर्ट मैं आपको नहीं बता सकता हूं. आई एम नॉट अलाउड टू डू इट. But Rakesh ji, he will know, and if he decides to reveal, then it is his choice. ठीक है. हाँ, धड़कन तो नहीं बढ़ती बहुत ज्यादा, ऐसा हार्ट रेट तो नहीं आप हो गए. नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आपका हार्ट रेट तो नहीं बढ़ा ना. नहीं. यस, सब करा सकते हैं ना. अभी तक नॉर्मल है, रिजल्ट के बाद पता नहीं. तो रिजल्ट तो आपको आएगा, उसके बाद आप बताइए, बट आप सब करा सकते हैं टेस्ट. सर, we're going to take the conversation forward, but I'm going to ask you if you'd like to address the boys and the entire group. If you want to say something to them. Shall I speak in Hindi? Because our people... Yes, sir. Yes, sir. Yeah, thank you. Network 18
की तरफ से आयोजित इस ओकेजन पर मंच पे बैठे हुए मैं तमाम महानुभावों का दिल्ली पुलिस की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। The doctor who is present here is a very renowned doctor in the field, and Rani everybody knows. दिल्ली पुलिस देश का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन पुलिस फोर्स है। हम करीब 94,000 स्ट्रेंथ के हैं और दुनिया में मेट्रोपॉलिटन पुलिस फोर्सेस में दिल्ली पुलिस एक बहुत बड़ा पुलिस बल है। जैसा मैंने पहले कहा, पुलिस ड्यूटी का कोई समय तय नहीं होता है। आप जिस वक्त घर से बाहर ड्यूटी के लिए निकलते हैं, हमें ये नहीं पता होता है कि हम 8 घंटे ड्यूटी करके वापस कितने बजे घर पे पहुंचेंगे। कई दफ़े लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैंडल करने के लिए हम सभी को 20-20 घंटे, 24 घंटे कंटिन्यूअसली काम करना पड़ता है। हमारी फोर्स जो है उसको अगर नौकरी के दरमियान समय नहीं मिले समय पर खाने के लिए या फिर समय पर एक्सरसाइजेस करने के लिए, तो उसका असर शरीर पे होता है। और कोई भी असर शरीर पे जो होता है वो एकदम से नहीं होता है, वो धीमे धीमे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमको ये महसूस होता है। जिस वक्त हम फोर्स ज्वाइन करते हैं, हमारी उम्र कम होती है, उत्साह ज़्यादा होता है, हमारा शरीर मजबूत होता है, हम सारे स्ट्रेस को और इस तरह की दिनचर्या को झेल लेते हैं। लेकिन उम्र के साथ और दिनचर्या जो इर्रेगुलर होती है, उसकी वजह से शरीर के हर एक अंग के ऊपर असर पड़ने लगता है। एज सीनियर ऑफिसर हम लोग अपनी फोर्स से हमेशा बातचीत करते रहते हैं और हमारा एक सबसे बड़ा ध्येय होता है कि हम फोर्स के वेलफेयर के लिए काम करें। और वेलफेयर में एक बहुत बड़ा हिस्सा है हेल्थ का। जब भी मैंने अपने जवानों से, अधिकारियों से बात की है और उनकी समस्याओं का जानने की कोशिश की है, तो उसमें मेनली जो हमारे जवान या अधिकारी होते हैं वो ट्रांसफ़र या पोस्टिंग्स इसलिए चाहते हैं कि वो शरीर से थक चुके हैं, उनको कुछ बीमारियां हैं और परिवार को भी देखना है, अपने शरीर को भी देखना है। तो अक्सर ये कहते हैं कि साहब मैं अब एक्टिव पुलिसिंग नहीं कर पाऊंगा, मेरे को ये सब तकलीफ है। मोस्टली मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने लोगों से मिलता हूँ उसमें 90% लोग या तो हाइपरटेंशन के शिकार होते हैं या फिर डायबिटीज़ के शिकार होते हैं। और ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो शरीर को धीरे धीरे खाती रहती हैं। आज हमें बहुत खुशी है कि नेटवर्क 18 ने ये बीड़ा उठाया है कि हमारे जवानों के बीच में, उनके फैमिलीज़ के बीच में एक इस अवेयरनेस कैंपेन करें कि अगर आपको डायबिटीज़ है, आपकी आंखों में असर हो सकता है। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को अभी सब कुछ ठीक दिख रहा है तो मेरे को ये रेटिनोपैथी डायबिटीज़ की वजह से नहीं हो सकती। और ये जो टेस्ट है मैंने तो अभी कराया, फर्स्ट टाइम मैं करा रहा हूँ, आई हैव नॉट गॉट इट डन, बट मेरी आंखें चूँकि मेरा चश्मा लगा हुआ है तो मैं हर 6 महीने साल में चेकअप कराता हूँ, तो इस एंगल से कभी चेकअप नहीं कराया मैंने। एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये अवेयरनेस आना और अगर चीज़ आपको समय पर पता चल जाती है तो उसका इलाज कराना या उसका मैनेजमेंट करना बहुत आसान होता है। मैं डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो इस कैंपेन में इनके साथ जुड़े हुए हैं। नेटवर्क की टीम के साथ नोवार्टिस की भी टीम है, दे आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब। मुझे अभी भी याद है लास्ट ईयर आपने कोविड के टाइम में बीएसएफ में मैं जब डीजी था, देन आई हैड बीन विद यू टटारी बॉर्डर व्हेन दिस कोविड का कैंपेन आपने शुरू किया था फॉर संजीवनी। संजीवनी, यस। तो आई थिंक यू आर डूइंग ए वेरी
nice and wonderful job. This area is a very neglected area. Mostly TV networks जो होते हैं वो entertainment या news या views के लिए होते हैं, but this awareness campaign from a leading news channel is something worth appreciating. और मैं दिल्ली पुलिस के तरफ से उनका हेड होने के नाते आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. सर आप लोग हमेशा ये कहते हैं ना, आप न्यूज़ वाले हमेशा हमारे पीछे पड़े रहते हैं, हमसे पूछते रहते हैं आप क्या कर रहे हैं. चलिए हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, हमको मौका मिल रहा है. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. पुलिस और प्रेस का जो रिश्ता है वो 36 का आंकड़ा जो होता है वो है. चलिए इसके दिस इज इन अ जोक, डोंट टेक इट एज अ नहीं इसके साथ अच्छा 32 की बात होगी, 36 की बात नहीं होगी, ऐसा है कि उसके बाद करेंगे. अच्छा आपके लिए सर, आपने पहली बार टेस्ट कराया तो उस टेस्ट का रिजल्ट आपके पास है, आप उसको पढ़ सकते हैं. उसके बाद अगर आप सबके साथ शेयर करना चाहें वो आपके ऊपर है. चेहरा देखो, चेहरा सर के चेहरे से गेस कर लेना गुड न्यूज है कि नहीं है. I don't feel hesitant to share with the people here. The results say that imaged eyes appear normal. No apparent retinopathy changes noted. No specific pathologies detected. If you experience any kind of problem in your vision, please visit your healthcare provider. क्या बात है. Thank you. जय हो. सर का ठीक निकल गया तो अपना भी निकल जाएगा इस उम्मीद से. सर दिस इज हिज रिपोर्ट. अच्छा रानी जी का भी आ गया है, माइक उठा के बताना चाहेंगे आप. मैं पढ़ूं आपके साथ में आके? मैं पढ़ लूं? हाँ जी पढ़ लूं. क्या लिख रहा है? नॉर्मल है सब. नॉर्मल है सब ठीक है. इमेज डाइज अपीयर नॉर्मल, नो अपैरेंट रेटिनोपैथी चेंजेस नोटेड. ये तो सिमिलर रिपोर्ट है, दोनों ठीक है. अरे दोनों आर ठीक है, तो यार तो हमारा भी हो जाएगा. ठीक है. सो ऊपर हमारे भाई बहन बंद, कोई घबराया हुआ था, सब डाउट क्लियर हो गए आपके? कोई आप स्क्रीनिंग कराएंगे कि नहीं कराएंगे? सब कराएंगे? अरे जोर से बोलिए. जय हो. बढ़िया. प्लीज 30 कैंप्स. ओके, दे हैव गॉट 30 कैंप्स across these camps. Please make sure आप अपने परिवार के साथ जाएं और नेत्र सुरक्षा के इस अभियान से जुड़ें, स्क्रीनिंग कराएं और पता कर लें. यार पता करने में क्या जाता है. बट यू टॉक्ड अबाउट डायबिटीज. क्विकली जस्ट 2 questions to Dr. Kim and Vaishali ji. What Asthana ji was saying, that in the force majority of the reasons is either hypertension or diabetes. Now do you also see this as a trend? For myself? No, not. I wanted to ask you. I said, did you ever get yourself checked for DR? Yes, I did. You did. Just a couple of weeks back, and then I got it checked through a retinologist too. So, fortunately, the report sounds similar. Report sounds similar. But do you believe that DR is now a common threat? Are people getting more aware, or is there still largely? I think it is because if you really look at diabetes, Yeah. which is hitting early now, and Right. doctor will agree with me that more and more younger people are getting diabetes, and therefore complications are going to come in earlier, whether we like it or not. Right. And therefore it's very critical that we all are aware about diabetes as well as the complications. Because what really happens, Anand, is that we all relate diabetes and kidney very easily. हाँ, दारू से लिवर खराब होता है, शुगर से Correct. किडनी खराब होता है. Kidney खराब होता है. And we आंखें खराब होती है, कोई really- नहीं सोचता. आंखें doesn't come naturally to us. And therefore I think it's just about the consciousness that we need to really bring alive, saying that it could affect our eyes, and therefore it's important to go and get ourselves tested. Yeah. And you made a very important point. Lab tests are only about the blood, but not about the eyes. And I Yeah. think it's very important, therefore, to go to our ophthalmologist or retinologist and get our eyes tested regularly. Great. Fantastic effort. Big round of applause for all of you, and also to Rakesh Asthana ji and to Dr. Kim, Rani Rampal, and of course Vaishali. I'm going to now just request Santosh Menon, Chief Content Officer, and also Brajesh Kumar Singh, Editor Convergence at Network 18, to please come up and present a very, very small token of appreciation and affection to Rakesh Asthana ji. We really are thankful to you. He's always helped us in these causes.
Now, I'm going to request Santosh and Brajesh to please stay on with us, and I'm going to request Shri Robin Hibu, Special CP Armed Police, Srimati Shalini Singh, Special CP Welfare, Srimati Sundari Nanda, Special CP HRD, Madhur Verma, Additional CP Armed Police, and Gaurav Sharma ji, DCP 1st Battalion, to please join us on stage. Thank you very much. And there's a small, yeah. Please come forward. Here. Please come here. This memento. I request you to present the memento. Yeah. This is to, please, Apuk sir. Yeah. So that was Srimati Sundari Nanda. This is Robin Hibuji, Special CP Armed Police. Srimati Shalini Singh. Shalini. Madhur Verma ji, he is the Additional CP Armed Police. And of course, Gaurav Sharma, DCP 1st Battalion. I have to say, Rakesh ji, that your team here, they've been very, very cooperative. They've really immensely helped us a lot. So special thanks from all the people who've been working in the background. Right, Manpreet? So thank you. Thank you very, very much. Yeah. Rakesh ji, I believe there is... This is from our side. Yes, this is from the Delhi Police to... our side, from Delhi Police to Network 18. Thank you very much. Thank you very much. Well, sir, to the panelists, and I'm going to ask Manpreet to come, and you take it on my behalf. Come, please. Dr. Kim. That's to Rani Rampal. So, and this one I'm going to request you to present to Manpreet, please. She's the one who's worked the hardest. Yeah. Thank you very much. I request all the other guests to please leave the stage. Please sit here. Madhurji, I'm going to request you to come and present the vote of thanks, please. Thank you, Santosh. Thank you, Brajesh. Good morning, everyone. I'm very thankful to the team of Network 18 for organizing this Netra Suraksha India Against Diabetes camp here at National New Police Lines. I must say it is not the only program which will be launched in coming days. There will be 30 such camps which will be organized. I would like to thank our Commissioner of Police, Shri Rakesh Asthana sir, for organizing this program. I must say, sir, your motivation for the welfare of Delhi Police has even surpassed our expectations, sir. I am thankful to Rani Rampal, who has come on our invitation at such a short notice. I am extremely elated to share the names of Dr. Ramaswamy Kim, who is Vice President at VRSI, Ms. Vaishali Iyer from Novartis, India, Shri Santosh Menon, Shri Brajesh Singh, and our favorite anchor and today's host, Shri Anand Narsimhan. Thank you. Shri Puneet Singhvi, who have been associated with us in organizing this program. I am extremely thankful to our Special Commissioner of Police, HRD Ma'am Sundari Nanda, Special Commissioner of Police, Armed Police, Robin Hibu sir, Special CP Welfare Ma'am Shalini Singh, and all other Special Commissioners of Police, Joint Commissioners of Police, and my friends, and even यहाँ पे उपस्थित मेरे साथी अधिकारीगण जो आज इस भव्य अवसर पर हमारे साथ शामिल हैं, मैं उन सबका भी तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। आखिर में
मैं नेत्र सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में जो कुल 1500 दिल्ली आर्म्ड पुलिस के कर्मचारी जो अगले 3 दिनों में यहाँ पे अपना आई चेकअप कैंप कराएंगे, जिनमें से 247 डायबिटीज हैं, 240 हमारे दिल्ली पुलिस आर्म्ड पुलिस के ड्राइवर्स हैं और 23 स्वेच्छा से आए हुए यहाँ पे अधिकारीगण, उनका भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी दिल्ली पुलिस के अपने साथियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि इस कार्यक्रम के बाद वो अपने नेत्र सुरक्षा कैंप में अपनी जरूर जांच कराएं और ताकि वो अपने आप को डायबिटिक रेटिनोपैथी से सुरक्षित रख सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। Thank you, Madhur ji. Sir, final word from you to the entire cadre, the team who are there. मैं अपनी टीम को, दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारियों, जवानों और उनके फैमिली मेंबर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जो कैंप का पूरा लाभ उठाएं। नोवार्टिस ने, नेटवर्क 18 ने ये कैंप आपके लिए आयोजित किया है। मैं फिर से दिल्ली पुलिस परिवार की तरफ से नेटवर्क 18 और नोवार्टिस का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये कैंप हमारे लिए ऑर्गेनाइज किया। Thank you, sir. Thank you. And before we wind up this launch event of the camps, 30 कैंप्स हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये बस आज पहला कैंप है, इसके बाद 30 कैंप्स और लगेंगे पूरी दिल्ली में। प्लीज़ उसका लाभ उठाएं। And before I say thank you to everybody, I'm going to request everybody just come together for a photo op, sir. Yeah, please. I'm going to request Aditi from Novartis to come up. Santosh, Brajesh, Farah, please come up from Novartis. Dr. Manisha ji, please. Robin Hibu ji, please come. And Shiv Kumar from Network 18. Shiv, please come up. Quickly, we'll just do a photo op. Delhi Police. Delhi Police, sir. Delhi Police. हाँ. Thank you. I'm just the 30 कैंप्स के जो लोकेशंस हैं, मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि कुछ लोकेशंस अभी भी फाइनलाइज हो रहे हैं, लेकिन जो धीरे धीरे आपको सारी डिटेल्स आपके पास पहुंच जाएंगी आपके रिस्पेक्टिव ऑफ यूनिट हेड्स की तरफ से, बटालियन हेड्स की तरफ से. इट विल बी रीच्ड आउट, बट दे विल हैपन ऑन अ रेगुलर बेसिस. Please stay for the national anthem. Please stand up for the national anthem. Namaste and Jai Hind. Thank you very much. I'm going to thank Rakesh Asthana ji, Vaishali ji, Rani Rampal ji, Dr. Ramaswamy Kim, and also all of you here at Delhi Police. Thank you very much. जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आज शायद आप सबको नहीं पता होगा, बट आज से कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो शुरू हो रही है 8 अगस्त तक. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पूरे इंडियन कंटिजेंट को जो वो चीयर करें, एंड दे विल ब्रिंग लोट्स ऑफ रोल टू अस. तो मुझे थोड़ा इंजरी है, उसकी वजह से मैं कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं खेल पाई, बट आई रियली विश कि जितने भी हमारे एथलीट्स कॉमनवेल्थ के लिए गए हैं वो बहुत सारे मेडल्स वहां से लेके हैं. तो आप सभी उनके इवेंट्स देखिए और उनको चीयर करिए. Lovely message, 100%. हुकुम की तामील होगी. Thank you, sir. Thank you so much. One big round of applause for Rakesh Asthana ji, please. Thank you.